She's working there right now, sir. Great. Thank you. Thank you, Charu. So, Welcome, Charu, sir. can you start on with the session? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So welcome back, everyone, and a very good afternoon to you, sir, and to everyone. So with a full pack session in the morning on Advanced Excel, we are proceeding with the same topic, Advanced Excel, and sir will be covering in this session pivot table. So looking forward for a great session, sir. Over to you. Thank you. Thank you, Charuji. And I'm Thank sure you so much. participants also enjoying learning, and also like whatever questions you are having, please like you are interacting. So also write in chat box. Charuji is there, Anjali ji is there. So she is going to help me. So again, today, like I'm going to cover the pivot tables. So pivot table, actually, I believe, like at your level, like someone who is not very expert in Excel, but if he or she knows pivot table very well, so most of the work, most of the analysis we can do with the help of pivot table very easily, and lot of charts we can create, like whatever, like formatting also we can do in pivot tables. So all those things are possible. So let's take example which we were having yesterday, or some more example. And today with the new features, there is a possibility of dashboarding also. So what is the dashboard, how to create dashboard in Excel? So those things also I'm going to cover. So that is going to be this session is going to be very amazing. So please note it down, like whenever like you find something very interesting. And also the best thing, the session is being recorded, and that is also available on YouTube also. So let's move. Let me share my screen first. Are you able to see my screen, Charuji? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Very good. Thank you. And files, Anjali ji, I have shared with you along with PPT. Anjali ji, I have shared files with you along with PPT, so you can share it with the participants. Right? Okay, okay, sure, sir. We'll do that. Okay. So before I'm going to cover this pivot table, there is a very good feature which we are having of subtotal, and also like there was a feature of consolidate, some comparison of data. So in these, like consolidate, subtotaling, there is no need of any formulas. Like system is going to do work for us. So sometimes like we are going to have a list for the like some research work, like you are having some data, and again the same list you are getting with some different data. So now you want to see what is the delta between both like the records. Okay, so that is a group of data, and the other is also a group of data. So how to do the comparison in a very easy way, very effective way, and without any complications, without any formulas. So like that, for that, let me give you some example. Consolidate. So here, like I am having, so this data which I am having right now, so that is like something like related to trial balance. So, but in your case, it can be like any data it can be. So it doesn't mean that, okay, I'm talking about the trial balance or something else. So you are having a group of data, and this data, these are the amounts, and again this data, and these are the amounts. So generally, like there should not be any difference, like maybe. But in case if there is difference, so we want to compare, and the comparison we want that, okay, what is our particulars, and data one, set of data one, and then data two, and what is the difference? That thing actually I want to know. So in that case, how to do this? So let's understand. So here, what you can do, you can go to the data. So most of the things actually which we are covering and which I feel like it is going to be useful for you. So that's our part of data analysis, data tab. So in data tab, we are having filtering, we are having this sorting, we are having this what if analysis, we are having this
forecasting and this data analysis tool also we are going to have, and this remove duplicates, and yesterday like we covered this flash fill. So all those are part of this data tab. So data tab is very important because here we are playing with the data. So now in this consolidate, what you can do, so there is a button like I was having this here. So there is a button of consolidate. So when I'm going to press this consolidate button, so this is asking me that, okay, which function you are going to use. So you keep it right now sum only. So reference you have to give. So you have to give the reference of first data. So my first data is this data. I should give the range of this data. I should add this data to my range. So this is the first data set I have added. Now again I have to give the second data set, and this data set I have given, and I should also add. So now there are two data sets which are part of that. So we want to compare this. But in like in case you want to have the 3 data sets, 4 data sets, 5 data sets, that also you can compare at one glance. Okay. So what you have to do, these are the 2 data sets. Now it is asking, okay, you put here huge labels in top row as well as you have to click left column also. So now you have to tell that, okay, where you want your data to be. So my cursor is there. Now just I have to press OK. Once I press OK, it will automatically create, you see, capital account, loans account, trade payables, and this is the data set of 31st March. This is the data set of 1st April. And if something was missing, like if you say deferred tax was there, so that was missing here. So like that, this is not part of 31st March, but this is part of 1st April. So like that, we are having this automatic comparison is there. Now, easily I can do the difference and I can find what is the difference, and accordingly I can take the action. So now it is telling me what is the difference. So I find that, okay, trade payables, what value was there in 31st March, but that is not in 1st April. So that's the thing, and there should be some difference. So this is the trial balance actually I'm talking about, but in your case, you can have a data and again, you can compare the data. So is it clear? And also you can consolidate also. Sometimes if you want to sum. So in that case, what you can do, the same heading you can put here, right? Right. So maybe the yesterday actually we were having the name. So Anjali ji, so let me change the name, and yesterday, so maybe some list, different list was there, or maybe I have worked, so by mistake I have deleted, so that some custom list was there. Okay, so we are having some like Anjali ji and Charu ji, Vijay, Raj, Mohan, Sham. So we are having some different names, A, B, C, D, and E. So like that, we are having different names. So in the same way, I am also having the names here, but that can be in like different manner. So maybe like I have sorted this. So that is like here I am having this, and so first like there is Vijay, then Sham, Raj, Mohan, anything, and something maybe there is instead of CC, there is ZZ is there. Instead of Raj, there is some like Amitabh is there. So now suppose if again if I want to compare, or if I want to add that, okay, whatever numbers are there, those numbers should be added here. So just for your example, so you'll also see that, okay, how this is going to same like numbers, but the values are different with the names. So again, I can do data and consolidate. So in consolidate, my range is already given sum. So because the now heading is same, 31st March and 31st March. So automatically when I'm going to click, so it is going to give me Anjali. So the total of Anjali is, here the Anjali was 1 rupee. Here the Anjali was 10 rupees. So it is giving me total, that is the 11 rupees. Right? But in case like I'm going to have ZZ, so ZZ is only one column, so that is giving me 8 rupees only. So I can do comparison also, I can do consolidate also. So comparison, you have to remember that this heading and this heading should be different.
So this is the like heading, like maybe today, and maybe we can say that this is the heading tomorrow. So now heading is different, but this heading should be same. So again, if I'm going to compare consolidated, okay, so automatically this is going to give me, this is the value of today and this is the value of tomorrow, and accordingly we can see the difference. So this is very, very handy. I have used many times, and really it is going to save our lot of time. So that is the one thing actually I thought that, okay, this is the feature, standard feature of Excel, and in all the versions it's going to work. 2007, 10, 13, or Office 365, all the versions it will work, right? And one thing I want to tell, I'm sure that is also is going to be very useful for you. So that is the subtotaling. So how to do the subtotaling? Like sometimes like you are having like different department, and for the each department you want to do the sum. So what you are going to do here, the finance is there. You want the total of finance total, and now you are going to do the sum. Now you are going to do the sum. So like that, you want to make some different color. So like that, you are doing this. Same thing you are going to do for HR department. Same you are going to do for operation department. Like some different departments are there, and for that, for students data is there or some other data is there, and you want to do subtotaling. This is called subtotaling. So there is a inbuilt feature in Excel. By using that inbuilt feature, any number of rows are there, huge data is there, immediately within seconds we can create the subtotaling, and also it will group the data. So sometimes if we want to do the summary, we can have the summary. Sometimes we want to have like in detail, so we can have the details also. So how that is going to work? So let's see. I'm just doing Control Z. So this is my data. I should put cursor anywhere in this data. I should my headers. Now where I should go? Again, I should go to data. In data, I should go here. This is there, this outline, and here there is a subtotal. So in this subtotal, when I'm going to click this subtotal, so I'll getting this window like this. In this window, friends, what I can do, I want at each change in department, I want to use the function of sum, where I want to do the subtotaling, Jan and Feb. I want to do the subtotaling on Jan and Feb both together. So this is the Jan and Feb. Now just click on OK. Once I click on OK, automatically you will see this will create the sum. Finance total, HR total, operation total, grand total. And you will see here 1, 2, 3. 3 layers it has created. What is the benefit of this layer? If you are going to click on first layer, so you are going to see only grand total. If you are going to click on second layer, so you are going to see only the summary data, only summary. And if you are going to click on third level, so you are going to get all the data. So sometimes like you are showing that, okay, your level is like second level. Now, if someone wants to see, okay, what is the total, this HR, I want to expand this data. So there is a plus sign. So this plus sign, if you are going to click, automatically only this particular HR total will be unhidden. And you can take, see what is the data, how it is reflecting, all those things. So again, if you are going to click on minus sign, again, this is summary. But if you want to unhide everything in single click, just click on third layer. So that is called subtotaling. So here automatically it has done sum, it has created line automatically. And so only thing like when you are doing this, your data should be sorted. Because in case you want to make this subtotaling, so you're based on the department, so your department should be sorted. In case you are having like different layer, like in case if I want to do the subtotaling, suppose here I am having the student data, and here I am having so much data. So here I want that, okay, like I want to state-wise, I want to compare the, I want to see the students, I want to see the fee charged. So first thing, if I want to do this state-wise, तो पहली चीज जो मेरे को करनी है, I
must sort this data state wise. अब अगर मैंने स्टेट वाइज इसको सॉर्ट कर दिया तो अब यहाँ पे मेरे पास एपी है, आसाम है, बिहार है. नाउ आई कैन डू द सब टोटलिंग वेरी इजीली. मेरे को करना क्या है इसके अंदर, अगेन यहाँ पे गया डेटा. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ रियल डेटा. देखिए अब आपके पास ये डेटा है एंड यू आर हैविंग मल्टीपल रोज. सो अगेन गो टू आउटलाइन एंड हियर दिस सब टोटल. So it is asking what you want to total fee charge. I want to do the fee charge का total. अब इसमें at each change it रोल नंबर पे नहीं, रोल नंबर पे नहीं. I want जब भी चेंज हो स्टेट के अंदर, मतलब at every change in state I want to create a new row and I want to do the sum of fee charge. Now just you click this. Once you click, automatically immediately you see total of AP. This is that fee charge. Total of Assam, this is the fee charge, and total of like Bihar, total of Delhi. And if you want to have the summary only, just click on the 2. So you are going to have only summary based on the state. So okay, these are the states and grand total is also there. So that is AP total, Assam total, Bihar total, and the total fee charged. If you want, someone asks you, okay, what is the in Delhi? What is the detail? Just click on the plus sign. So this is the detail of Delhi. That okay, in roll number this Manjunath, date of birth, male, English medium, state Delhi. What is the hobby and what is the amount? So this is the thing actually automatically it is creating. So this is the subtotal feature of Excel. So for analysis, because sometimes we are having huge data. So you see कितनी जल्दी से इसने हमारे को समरी दे दी. लाइक एक नंबर पे केवल ग्रैंड टोटल दे रहा है. सो टोटल फीस मेरी जो रिसीव हुई वो 24 लाख रिसीव हुई है और स्टेट वाइज मेरे को ये रिसीव हुई है. अब कल को आपको हॉबी वाइज करना है, हॉबी वाइज कर सकते हो. कल को आपको 2 लेयर पे करना है, 2 लेयर पे भी कर सकते हो. तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर करनी है. तो एक दिन में नहीं होगा. बट आई एम टेलिंग यू लाइक सच टाइप ऑफ फंक्शनलिटी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग एक्सेल इज एन एरोप्लेन. But most of us, we are using it as a cycle. Even कुछ लोग तो साइकिल भी नहीं यूज कर रहे, उसको भी हाथ से चला रहे हैं. मतलब साथ भी चल रहे हैं और साथ साथ में अपने साथ में साइकिल को भी खींच रहे हैं. तो like those things actually we have to avoid. We need to understand the power of Excel and in day-to-day working. And it's not that okay if you are teacher then only like it is going to be useful. Excel is something like whether like if you are working as some घर का भी अगर कोई आपको डेटा है, कुछ आपको मेंटेन करना है, भाई बच्चे हैं उनके अगर आपको काम करने हैं, उसके लिए भी एक्सेल जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. राइट चारू जी, इज इट मेक सेंस? कैसा लग रहा है आपको? Absolutely, it's very useful. It's a very useful function, sir. Great, very good. So participants also, like if you have any question related to my topic, so you can ask in chat box. And if some other questions are there, so maybe at the end or through email or through phone number, you can connect with me. Okay. So that was the subtotal function, which I thought that is going to be very, very like useful for you. And also in 2010, there is, because you people are doing this analysis, so there it is going to work very well. So how this is going to, there is a chart and that is called Sparkline chart. This is also going to be very useful because I feel that, okay, I also do lot of analysis, like at the time of when I was working with the corporates, and now I'm also doing this practice automation things I'm doing. So for that also, I'm having this type of analysis. So I know that this Sparkline is there, subtotal is there, pivot is there, how this is making difference in my working. So one, this Sparkline, how this is going to work. So let's see the example. And let's take the example which we were having this bootstrapping. So there, like I'm having some sample data and which we created here sample. And in this sample, let's see, I remove this data. Oh, sorry, this data. I'm having this data and I want to see like ये जो sample है, ये जो sample मैंने ले रखा है यहाँ पे, suppose करो ये person 1 का है और ये person 1 से लेके person ये ऐसे, तो मेरे पास different samples हैं जो मैंने collect किए हैं, जो set मैंने ये ले रखा है. अब इसके ऊपर मेरे को analysis ये देखना है
Now if I want to see how the trending is going on from person 1 to person 2, person 3, person 4, कैसे ये चीज मूव कर रही है, तो मेरे लिए नंबर्स को देखना, समझना, एनालिसिस करना, इट्स literally very very difficult. But what I can do, I can create a chart, that is the Sparkline chart. Where is that chart? Go to insert. So जब आप insert में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है स्पार्क लाइंस. ये एक चार्ट था, ये तो स्टैंडर्ड चार्ट था. यहाँ पे स्पार्क लाइन है जो डेटा के बेस पे चलेगा, लाइक जैसे फॉर्मूले लगते हैं, लाइक दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट. जैसे शेयर मार्केट होती है, ऐसे ऐसे चलती है आपकी शेयर मार्केट. दिस इज गोइंग टू कवर लाइक दैट. तो यहाँ पे आप गए और आपने बोला कि मेरे को स्पार्क लाइन चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट. तो लाइन चार्ट में इट इज आस्किंग यू व्हाट इज योर डेटा रेंज. जैसे फॉर्मूले में आप करते हो ना सम, तो आपने बोला जी मेरे को इसके ऊपर चार्ट बनाना है, सम रेंज. और लोकेशन क्या है जी आपके चार्ट की, वो कर दिया आपने L7 और यहाँ पे बोल दिया आपने ओके. तो ये देखिए इसने क्या किया, एक बढ़िया से आपको एक लाइन क्रिएट करके और ये आपको दे दिया जी. ये देख रहे हो. अब इसको जैसे फॉर्मूले को खींचते हैं, ऐसे आपने इसको फॉर्मूले की तरह और इसको खींच दिया जी चार्ट को. अब ये क्या करेगा, आपको सारे के अंदर जो है ये चार्ट में ये आपको दे देगा. अब अगर आपका डेटा बाय द वे चेंज होता है, अगर एनालिसिस करना है आपको, कहीं पे माइनस नंबर है, कहीं और है, तो इसके अंदर आपका ये डेटा भी चेंज होकर के चार्ट भी चेंज होते रहेंगे. देखिए तो इससे क्या होता है, ट्रेंड लाइन पता लग रही है आपको कि कहीं पे क्या है. अब अगर सपोज करो इसमें माइनस का भी डेटा होता है कहीं पे, और आप चाहते हो कि इसमें माइनस अलग से रिफ्लेक्ट करे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने इसको सिलेक्ट किया है, ये जो चार्ट आपने ये जो कर रखा है यहाँ पे, इधर जो हमने ये जो किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जाकर के इसके अंदर एक अलग से टैब बन जाएगा आपका, वो है स्पार्कलाइन चार्ट. और यहाँ पे आप क्या दे सकते हो कि आपका जो स्पार्कलाइन कलर है या आपका जो हाई पॉइंट है उसको अलग से रिफ्लेक्ट करे, ये इसको जो है लो पॉइंट है उसको अलग से रिफ्लेक्ट करे. तो ये क्या कर रहा है, आपको हाई पॉइंट या आपको केवल हाई पॉइंट ही देखना है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉइंट्स को अलग से रिफ्लेक्ट करे. तो ये देखिए आपको ये दिखा रहा है. तो अब इसने क्या किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे आपके जो हाई पॉइंट्स है उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हाई पॉइंट कहाँ पे है. इस फर्स्ट डेटा सेट में हाई पॉइंट जो है वो 92 नंबर है. देखिए ये इसमें अलग से नजर आ रहा है. इसके अंदर जो है वो मिडल के अंदर है हाई पॉइंट. यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर पे हाई पॉइंट है, इसके अंदर 69 इज द हाईएस्ट पॉइंट. ये इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे दिखा रहा है ये. तो लाइक दैट ये एक स्पार्कलाइन चार्ट से भी आप जो है बहुत अच्छा एनालिसिस आप इसमें कर सकते हो. जैसे नंबर चेंज होंगे ये आपके चेंज होते रहेंगे. देखिए मैं आपको, क्योंकि मैंने इसमें रैंड बिटवीन लगा रखा है तो इसलिए नंबर चेंज हो रहे हैं, बट आप अपने एक्चुअल डाटा पे करोगे तो आपको इमीडिएटली देगा. और कई बार अगर इसमें माइनस में नंबर डाल दिया, मैंने सपोज करो इसमें डाल दिया -20 और मैं चाहता हूँ माइनस अलग से रिफ्लेक्ट हो, तो यहाँ पे माइनस का देखिए इसमें अलग से एक रिफ्लेक्ट ये दिखाएगा मेरे को माइनस का. और मैं केवल नेगेटिव नंबर को रिफ्लेक्ट करना है मेरे को लगता है कि यार मेरे जो है ना इसमें केवल नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होने चाहिए कहीं. अब अगर आप इस डेटा में देखोगे और कहीं पे एक नेगेटिव पड़ा हुआ है तो बड़ा मुश्किल है उसको ढूंढना. बट अगर आपने इसको चार्ट कर दिया, इमीडिएटली आपको ये पॉइंट करेगा, अरे ये तो नेगेटिव पॉइंट है, इसमें नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए मेरे डेटा में. आपको पता लग गया जी इस लाइन में कहीं ना कहीं सैंपल 3 में कोई इश्यू है. ये माइनस कैसे हो सकता है जी, माइनस थोड़ी होता है इसमें. तो बस ऐसे करके आप एनालिसिस कर सकते हो इसमें. कहीं और जैसे माइनस आएगा इसमें इमीडिएटली आपको ये जो है रिफ्लेक्ट करेगा. देखिए ये देखिए माइनस पे रिफ्लेक्ट कर रहा है डेटा. और इसको चार्ट को ऐसा नहीं कि लाइन चार्ट ही बनाना है आपने, आप इसको चेंज करना चाहते हो चार्ट को. स्पार्क लाइन पे गए, आपने बोला जी मेरे को तो ये कॉलम चार्ट बनाना है जी, तो देखिए कॉलम चार्ट आपने बना दिया. तो अब की बार इसने कॉलम की तरह ये बना रहा है, जहां जहां पे नेगेटिव पॉइंट्स हैं वहां पे नेगेटिव आ रखा है. यहाँ पे कहीं और मैं नेगेटिव डाल देता हूँ एक, तो यहाँ पे देखिए इसका ये अलग से कलर देखिए डिफरेंट हो गया. तो ऐसे करके बड़ा नंबर जो है बड़ा ये दिखा रहा है आपको बार, छोटा नंबर छोटी बार दिखा रहा है. जहां पे 1 है वहां पे देखो बिल्कुल स्मॉल सा एकदम दिखा रखा है, और जहां पे नेगेटिव है वो माइनस दिखा रखा है. तो लाइक दैट इसके थ्रू हमारे को स्पार्क लाइन जो है, मेरे को ये 2010 वर्जन में है, जिसके पास 2007 वर्जन है 7, वहां पे ये काम नहीं करेगा जी. 2007 में ये काम नहीं करेगा. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2010 में देखो आपकी ये चीज आई, 2013 में फ्लैश फिल आया, राइट. अब जो माइक्रोसॉफ्ट 365 जो बात कर रहे हैं, ऑफिस 365 की बात कर रहे हैं, उसमें तो इतनी चीजें आ गई हैं कि आप देख करके हैरान रह जाओगे कि अरे ये ऑफिस 365 में ऐसा भी हो सकता है, ये भी काम कर सकते हैं.
बिना फॉर्मूले की मदद से या बिल्कुल एक हल्का सा कोई फॉर्मूले से आप पता नहीं कितनी चीजें उसमें बना सकते हो, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। हाँ जी चारू जी, व्हाट इज योर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट? Sir, absolutely. I think for the finance people, this is especially very useful. तो आप लोग भी जैसे रिसर्च करते हो तो सबसे पहले तो आपको अपनी डेटा की क्वालिटी देखनी है ना। एक आपको एट ए ग्लैंस बिल्कुल अगर अपने डेटा में से पता लग जाए कि अच्छा जी कहाँ पे क्या बिल्कुल प्रॉब्लम है, तो बड़ा अच्छा जी। रहेगा। आपको मार्क्स हैं या बच्चों के या कहीं पे कोई और सैंपल आया आपके तो पास। बिल्कुल, so we can remove the outliers too. यस यस। तो इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो लाइक पार्टिसिपेंट का, तो प्लीज आप मेरे को बताइए, और अदरवाइज फिर मैं पिवट टेबल के ऊपर आगे बढ़ता हूँ। Participants, if you have any question, please put it in the Q&A box. कोई भी डिटेल, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया कि माइक्रोसॉफ्ट 365, तो 365 की जो डिटेल्स, जो एक मेरी वर्कशॉप वो वीकेंड पे है, वो वेबसाइट के ऊपर डिटेल्स हैं, जो चैम्प एक्सेल की वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल, वहां पे आपको डिटेल्स मिल सकती है। Sir, there is एक a ने question. हाँ, Sorry, किसी ने sir. पूछा है कैन वी यूज ऑल दिस फैसिलिटी ऑनलाइन 365? तो जो ऑनलाइन 365 है जी, उसके अंदर लिमिटेड फंक्शनलिटी है। आपको 365 का फुल वर्जन लेना होगा, तभी आपको ये सारी फंक्शनलिटी मिलेगी। काफी कुछ चीजें मिल जाएंगी आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, बट जनरली क्या होता है, जो ऑनलाइन चीज है उसका मतलब होता है, ऑनलाइन का मतलब कि आप, एक तो होता है ऑनलाइन तो फ्री वर्जन मिल रहा है इसका, माइक्रोसॉफ्ट 365 का फ्री है ऑनलाइन, या बहुत ही उसका नॉमिनल चार्ज है। लेकिन आपको जो माइक्रोसॉफ्ट 365 का पूरा वर्जन लोगे, वो ऑनलाइन भी चलेगा आपका, और आपका डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे भी चलेगा। तो जब वो डेस्कटॉप लैपटॉप पे चलेगा, तो उसके अंदर आपको पूरी फंक्शनलिटी आपको मिलेगी। Right, sir. So there is one question Q&A box. Kaustav Mukherjee is asking that can this type of graph be used for time series data? टाइम सीरीज डेटा मींस? As in periodically in which we see if we are talking about stock market, so year wise if we are comparing a price or the high the stock has touched, so something हाँ like that time series data. हाँ, तो वो वही तो है ये टाइम सीरीज। अगर आपके देखोगे इसको लाइन चार्ट जैसे, लाइक जो है ना, आई हैव शोन इट एज ए लाइन चार्ट आल्सो, एज ए ये स्पार्क लाइन। तो इसमें रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है कि अभी तो आपका डेटा क्या है, कभी कम हो रहा है, अब उसमें आपका प्राइस की मूवमेंट अगर ऐसे होगी आपकी, तो आप इसमें देख सकते हो। जैसे वो तो मैंने आपको लाइन चार्ट, लाइक बिफोर जो फर्स्ट हमारा जो पार्ट था, उसमें आई टोल्ड कि लाइन चार्ट है। एक जो रेनफॉल जो भाई चार्ट है, या कुछ आप इसका ये बता रहे हो, जी तो इसमें जी चार्ट्स तो बहुत कुछ है, आप इसके अंदर एक्सप्लोर करना है। बिकॉज अभी हम जो है ना केवल भाई चार्ट्स की बात नहीं कर रहे, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके जो चार्ट्स नजर आएंगे, यहाँ पे बहुत कुछ इसके अंदर आपको नजर आएंगे। देखिए चार्ट जो है, कितनी तरह के इसके अंदर चार्ट्स नजर आते हैं इसमें, आप ढूंढ सकते हो, इसमें कर सकते हो कि ऑल चार्ट्स। तो ऑल चार्ट्स में देखिए लाइन भी होता है, पाई होता है, बार है, एरिया है, स्कैटर है, मैप, स्टोक चार्ट है, सरफेस, रेडार, ट्री मैप। अब ट्री मैप है, ये 2016 में आया है मेरे हिसाब से, हाँ 2016 में आया ट्री मैप, तो बहुत बढ़िया है। सनब्रश चार्ट है। अब सनब्रश चार्ट को अगर आप यूज करोगे, आप देख करके हैरान हो गए, इतना बढ़िया बढ़िया चार्ट, इतना बढ़िया जो है ना ये काम कर सकता है हमारे लिए। सनब्रश चार्ट जो है ना बहुत बढ़िया चार्ट है। सनब्रश हिस्टोग्राम है। बॉक्स एंड विस्कर, जो बॉक्स की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये बॉक्स एंड विस्कर जो चार्ट है, इसके थ्रू जैसे आप ये इसमें वाटरफॉल चार्ट है, ये बड़ा काम की चीज है वाटरफॉल चार्ट, कि कैसे कैसे मेरी मूवमेंट हो रही है। कि अगर कोई चीज है, पहले अगर मेरे पास कोई, भाई मैंने बजट था मेरे पास, और वो बजट था मेरे पास 1000 रुपए का। अब उसके बाद मैंने 1000 रुपए में से सपोज करो कि 200 रुपए खर्च किए मैंने किसके ऊपर, कोई ऑफिस के, कहीं ना कहीं कोई मैंने फर्नीचर के ऊपर खर्च किए, तो 1000 से वो 200 हो गया, 800 रुपए। फिर मेरे पास कोई इनकम आ गई, डोनेशन आ गया 300 रुपए, 800 से 1100 हो गया। तो वो जो रिफ्लेक्शन है, वो वाटरफॉल चार्ट बोलते हैं, कि आप कैसे आप उसके अंदर वाटरफॉल चार्ट इसको यूज कर सकते हो। ये रिफ्लेक्शन आपको दिखाएगा जी, कम हो रहा है तो कम करेगा, ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा करेगा, इस टाइप की आप चीजें बना सकते हो इसमें। तो हर एक चीज के एग्जाम्पल्स हैं, वो चीजें अगर आप इसमें, क्योंकि सब जगह टाइम का कंस्टेंट है, अदरवाइज तो किसी दिन आप लोग अगर चाहोगे तो एक दिन हम चार्ट्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, कि केवल चार्ट्स की एक वर्कशॉप रख सकते हैं 2 घंटे की, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ ओनली चार्ट्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। वाटरफॉल भी, हिस्टोग्राम भी, जो भी आप चाह रहे हैं, वाटरफॉल भी,
सब ये जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। बट आई एम श्योर ये जो स्पार्कलाइन चार्ट है ये नॉर्मल चार्ट जैसा नहीं है, ये आपका चार्ट जो है फॉर्मूले की तरह लगता है एंड इट इज वेरी यूजफुल। और ये सिंगल सेल में लगा हुआ है, ये चार्ट ऊपर वाले चार्ट से डिफरेंट है। और जैसे हम फॉर्मूले को खींचते हैं ऐसे आप इसको खींच सकते हो चार्ट को। और एक इसका टाइप दूसरा भी है स्पार्कलाइन चार्ट का, जिसको बोलते हैं विन लॉस। ये कुछ इस टाइप से विन लॉस ये बनता है आपका, कि जहां पे आपका मतलब विनर पॉजिटिव नंबर है वो आपके दूसरे कलर में। अच्छा, कलर भी चेंज कर सकते हो आप चाहो इसमें, कभी भी कलर्स को और को ये देखिए बहुत चीजें हैं इसमें, जाकर के आप चेंज कर सकते हो कलर्स वगैरह। मार्कर आप कहीं पे कर सकते हो, एक्सिस वगैरह इसमें डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो कि उसका डिफरेंट कलर होना चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट ये आपका डिफरेंट कलर हो गया। लास्ट पॉइंट का डिफरेंट कलर होना चाहिए। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट का कलर है, ये लास्ट पॉइंट का कलर है। बीच में आपने बोला कि आपका नेगेटिव पॉइंट है, उसका ये कैसे आपको जो है ना ये करना है। मार्कर कलर्स कैसे आप चाहते हो, तो इसमें हाई पॉइंट का कलर क्या चाहिए, नेगेटिव पॉइंट्स का कलर आप चाहते हो कि कोई दूसरा होना चाहिए, तो आपने बोला जी मेरा नेगेटिव पॉइंट्स का जो कलर है वो मेरा ग्रीन होना चाहिए। तो देखिए अब ये क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट का कलर, ये हो गया लास्ट पॉइंट का कलर, और ये हो गया आपका नेगेटिव पॉइंट का कलर। तो आप इस टाइप से जो है चीजों को कर सकते हो एनालिसिस। ये सारी की सारी चीजें इनबिल्ड है, आपको इसके लिए कोई चीज परचेज नहीं करनी, बस आपके पास तो एक्सेल होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, और आपके अंदर एक ये होना चाहिए कुछ नया करना है, कुछ सीखना है मेरे को, चलो मैं इसको ऐसे करके देखूं, अरे इसका क्या मतलब हुआ, अरे इसका क्या मतलब हुआ। इस टाइप की चीजें आप करोगे तो आपको सब कुछ लर्निंग आपकी धीरे धीरे होती जाएगी। राइट, चलिए जी, Absolutely. ओके जी, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चंस मैं देख रहा था चैट बॉक्स में किसी का, और अगर कोई है तो इसके अंदर, हाउ टू चेंज विड्थ ऑफ लाइन चार्ट। So they are basically having few questions relating to formatting, as we ओके, can how we can change the width or the level, or if we can add some color or something. अब कोई मेरे से गोल सीक पूछ रहे हैं। गोल सीक इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, समथिंग लाइक वी वांट कि हम एंड रिजल्ट पे पहुंचना चाह रहे हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस फॉर्मूलाज, तो मैं कैसे उसको यूज कर सकता हूँ। तो ये भी एक गोल सीक का एक जो है इसमें फंक्शन है, एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन है। तो चीजें ये सारी हैं, बट पहले लेट्स डू विद द पिवट टेबल्स, बिकॉज आई फील कि पिवट टेबल जो है उसके अंदर कैन वी ऑल्सो मेक डायनामिक ग्राफ यूजिंग एक्सेल। तो ये जितने भी ग्राफ हमारे बन रहे हैं डायनामिक ही तो है। अगर हमारा डेटा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली मेरे चार्ट्स चेंज होंगे। डायनामिक का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू, संतोष जी लिखते हैं कैन वी ऑल्सो मेक डायनामिक ग्राफ यूजिंग एक्सेल। तो डायनामिक का मतलब इफ माई डेटा इज चेंजिंग, माई जो रिफ्लेक्शन है वो मेरे चार्ट्स के ऊपर नजर आए। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी चार्ट्स एक्सेल के अंदर हम बनाते हैं ऑल आर डायनामिक। इन केस अब आपका ये डाटा मेरा चेंज हो रहा है, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो मेरा जो डाटा चेंज होगा ऑटोमेटिकली मेरा ये चार्ट्स जो है चेंज हो गए। देखिए आप चेंज हो रहे हैं चार्ट्स, ये डायनामिक ही तो है मेरा। राइट, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं पिवट टेबल का, और एक मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूं कि डैशबोर्ड जो है कैसे बन सकते हैं, कैसे डैशबोर्ड आप बना सकते हो। अब डैशबोर्ड जो है किसको बोलते हैं, पहले मैं एक बार आपको एक डैशबोर्ड का एक एग्जांपल देता हूं, दिखाता हूं मैं आपको डैशबोर्ड किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद जो है आपको वो बनाना सिखाऊंगा कि मैं कैसे उसको डैशबोर्ड को हम बना सकते हैं। और ये पिवट का पार्ट है, पहले आपने पिवट कल हमने थोड़ी वो की थी, उसी के अंदर ये पिवट जो है कैसे फर्दर इसके अंदर आपको हेल्प करेगी। देखिए एनालिसिस में तो हेल्प करेगी आपको। इसको बोलते हैं, देखिए अब ये डैशबोर्ड एक खोल के दिखाता हूं मैं आपको, और इस टाइप का डैशबोर्ड या टेबलिंग ये आप इसमें अपने यहाँ पे कर सकते हो जी। ये देखिए जी, ये आपको डेटा ये नजर आ रहा है डैशबोर्ड। अब ये जो डैशबोर्ड है, मेरे पास कोई डेटा है, जैसे मेरे पास क्योंकि ज्यादातर डेटा जो है वो फाइनेंस का है, बट आपका डेटा अगर आप मैंने आपको वैसे लिखा भी था कल भी कि वो अपना सैंपल डेटा दो, तो मैं आपका डेटा भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी बना सकता हूँ। बट एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो वो फाइनेंस का डेटा है कि एचआर का डेटा है कि आपका कोई स्टैटिस्टिकल डेटा है, कोई सैंपल है, कोई भी चीज है, सबके ऊपर काम करेगा आपका। आपको फंक्शनलिटी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो डेटा है ये कैसा है, जैसे हम बिग बाजार में जाते हैं और बिग बाजार में हमने गया, कोई भी आइटम हमने उठाया और उसको भाई उसमें बास्केट में डाल दिया, बाद में उसकी बिलिंग हुई,
कोई सेल्समैन है हमारी हेल्प कर रहा है उस सेल्समैन ने। तो सपोज करो हमने डिफरेंट डिफरेंट ये प्रोडक्ट्स हमने खरीद रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, कोई शैम्पू खरीद रहे हैं, कोई पिज्जा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी लाइक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एमआरपी क्या है, कितने रुपए का उसने हमारे को बेचा, और कंपनी को उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, कितने रुपए का कंपनी ने खरीदा था और कितने का हमारे को बेचा, और किस आदमी ने जो उसमें वहां पे जो बंदे थे किस आदमी ने हमारी हेल्प की, कौन बंदा था जिसने हमारे को ये सेल किया और किस डेट को सेल किया। ऐसे मेरे पास सपोज करो 5 ये मेरे पास कॉलम है बस। अब अगर इस डेटा को मेरी लाइन हो सकती है भाई 10,000 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है। अब इसके ऊपर मेरे को एनालिसिस करना है, मेरे को ये करना है डेटा को कि इस डेटा के ऊपर क्या चीज है जी, मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, क्या कोई रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। तो व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स एक्चुअली वी कैन क्रिएट। अगर मैं आप लोगों से पूछूं मैम चारू जी, आप वेदर मतलब यू आर ए फाइनेंस पर्सन और नॉट, बट सपोज सच टाइप ऑफ डेटा, और आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपने एक अपना बिग बाजार का जो है एक अपना खोल रखा है स्टोर, और वहां पे आपके पास सच टाइप ऑफ डेटा इज देयर। सो इस डेटा से व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट यू फील कि आपको मिल सकती है, व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट, क्या आप पार्टिसिपेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, कि व्हाट टाइप ऑफ रिपोर्ट लाइक वी कैन गेट फ्रॉम दिस डेटा। So Kuljit ji is asking profit margins. प्रॉफिट मार्जिन है एक मेरे को, और इसमें क्या हो सकती है, जैसे क्या बोल रहे, और भी देखिए एक बार चैट बॉक्स में क्या बोल रहे हैं जी। हाँ जी बताइए जी। Sir, which product sale is more is answered by Keshav Jha sir. यस यस बिल्कुल ठीक बात है, विच प्रोडक्ट सेल इज मोर, मतलब प्रोडक्ट वाइज सेल हम इसमें निकाल सकते हैं। जैसे अब Particular इसमें date sale. हाँ पर्टिकुलर संडे को हमारी सेल कितनी हुई, सेल्स की रिपोर्ट बन सकती है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं जी, जितने भी ये बता रहे हैं। एबीसी एनालिसिस है, रेवेन्यू बाय मंथ, बहुत बढ़िया है जी। ये देखिए इन्होंने लिखा है रेवेन्यू बाय मंथ, कुलविंदर जी ने, कि मंथ वाइज हमारा रेवेन्यू कितना हो रहा है जी, विच सेल्समैन सेल्स मोर, वेरी गुड एक्सीलेंट। मतलब ये जितने भी आप लोगों के रिफ्लेक्शन आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इसका मतलब अब आप जो है ना वैसे मतलब एक्सेल यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट आपको ये तो पता है कि अगर इस टाइप का डेटा हो तो क्या चीज आपको चाहिए, विच आइटम इज से ज्यादा रेवेन्यू आता है हमारे को, कस्टमर हु बाई अस मोर फ्रिक्वेंटली। तो इस टाइप की चीजें हम इसमें, सेल्स फोरकास्ट है, ट्रेंडिंग है, ये बिल्कुल आपने जितने भी क्वेश्चन ये किए ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके पिवट टेबल से मिल सकते हैं आंसर, और डैशबोर्ड के थ्रू उसको हम बढ़िया से जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं डैशबोर्ड के थ्रू। और डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है मैम, डैशबोर्ड वर्ड कहां से लिया गया है चारू जी, डैशबोर्ड वर्ड जो है वो कहां से लिया गया है, विच इंडस्ट्री मतलब जो है डैशबोर्ड वर्ड लिया गया है, कहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है डैशबोर्ड। जी सर रिटेल सेगमेंट में ज्यादा। नहीं नहीं रिटेल सेगमेंट नहीं, ये कोई और चीज है जो डेली हमारे यूज की चीज है, वहां पे हम डैशबोर्ड एक यूज करते हैं। कि डैशबोर्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब वाई मतलब वी आर कॉलिंग इट डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, कहां पे यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जैसे आपकी भाई गाड़ी है हमारे पास, जी मोस्ट ऑफ जी अस सर। मतलब हैविंग कार, तो उस कार के अंदर हम डैशबोर्ड होता है। तो डैशबोर्ड का फायदा क्या होता है, यू आर सिटिंग एट द ड्राइवर सीट, तो ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको ये थोड़ी है कि उस गाड़ी के पीछे भाग के कोई उसकी देखने की स्पीड कितनी है, आपको डैशबोर्ड पे बैठ के पता है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल कितना है, you know कि what is the speed of my car, what is the temperature in my car, how much kilometer I have भाई जो ड्राइव कर चुका हूं इसको, राइट right? उसकी कूलिंग कैसी है, राइट right? उसके अंदर म्यूजिक का अगर आपको देखना है तो वहीं पे जी आपको जी। डैशबोर्ड पे चीजें, तो ये डैशबोर्ड है कि आपको डैशबोर्ड पे एक ही जगह पे बैठ के यू कैन हैव द फुल पोजीशन टोटल एनालिसिस यू कैन फाइंड आउट, दैट मींस डैशबोर्ड। सो इसी तरह से लाइक यू पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ लाइक डेटाबेस, और उसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, एंड यू वांट की रिपोर्ट शुड बी लाइक दिस, कि आप एक जगह पे बैठ के डिफरेंट डिफरेंट वे में आप उसको रिपोर्ट्स को देख सकते हो। जैसे कि अभी इसके अंदर बोल रहे हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स का जो इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है कि किसी को विच सेलमैन सेल्स मोर, किसकी सेल्स सबसे ज्यादा है, कौन सा रेवेन्यू ज्यादा दे रहा है, मंथ वाइज एनालिसिस है, तो इतनी सारी रिफ्लेक्शन आ रहे हैं। तो इसको अगर हमने प्रेजेंट करना है डाटा को एक प्रॉपर उसमें मैनर है, और वहां पे हमारे पास रिफ्लेक्शन भी अब चेंज कर सकें, उसको बोलते हैं डैशबोर्ड। तो इसको मैं अब करके दिखाऊंगा आपको कैसे बनाएंगे। पहले मैं इसका एंड प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे है डैशबोर्ड। अब मैंने इसके बेस पे ये डैशबोर्ड बना दिया जी। अब देखो जी, चीज वही है, डेटा वही है, और इसके अंदर देख करके आप देखिए कि क्या चीज ये बता रहा है। इसमें ये मेरे को ये बता रहा है कि मेरी रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट कितनी हुई, मेरी बिस्किट की सेल कितनी हुई,
ब्रेड की सेल कितनी हुई, बर्गर की सेल कितनी हुई, ये मेरे को दिखा रहा है। और रेवेन्यू बाई मेरे को सेल्समैन भी दिखा रहा है कि मेरी सेल्समैन वाइज सेल कितनी हुई, बैटमैन, बिग मैन, कूल मैन, कितनी कितनी सेल हुई। ये मेरी कंपनी की टोटल पिक्चर दे रहा है। जैसे आपके पास एक डाटा हो गया, सारे स्कूलों का डाटा कोई हेड ऑफिस में और उनके पास आ गया, तो एक पिक्चर उसको देखने की ओवरऑल मेरा भाई क्या डाटा है। अब जैसे कि अच्छा जी पूरे हर एक स्टेट के, अब देखना स्टेट वाइज कि मेरे स्टेट के अंदर कितना है। अब स्टेट के अंदर आपको देखना है सिटी का डाटा कितना है, कि उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एरिया पे कोई चीज देखनी है। अच्छा यार मेरे पास स्टूडेंट्स का डाटा आ गया कि अच्छा जी भाई अलग अलग हॉबी का डाटा आ गया। अब आप देखना चाह रहे हो यार क्रिकेट की जो हॉबी है वो हर एक स्टेट्स में कितनी है, क्या क्या है हॉबी, कितने स्टूडेंट्स हैं, या आप ये देखना चाहते हो कि एक स्टेट में किस किस हॉबी के कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो उसके लिए अब आपका जो ये डाटा जैसे ये बना हुआ है, अब इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट है, सेल्समैन है। अब इसके अंदर अब इसमें आप देखना चाह रहे हो कि अच्छा जी मेरे को तो केवल बैटमैन की सेल देखनी है। अब आपने इस पे क्लिक किया बैटमैन को, तो ये देखिए ये जो चीज आ गई ओनली बैटमैन का रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बैटमैन ने 8838 रुपीज की टोटल सेल की और इस प्रोडक्ट की सेल की। ये उसके काउंट्स हैं इस रेंज में, मतलब उसने 1 to 30 रुपीज के 4 प्रोडक्ट्स बेचे हैं। ये उसका रेवेन्यू और लॉस है, इतना रेवेन्यू है ग्रीन वाला, इतना उसकी कॉस्ट है। अब बैटमैन ने ये तो किया सारे प्रोडक्ट्स का, लेकिन हम चाहते हैं यार बैटमैन ने बर्गर की सेल कितनी की, खाली बर्गर की एनालिसिस करना है। तो देखिए बैटमैन ने 731 रुपीज के बर्गर बेचे, 7 बर्गर बेचे टोटल। एक बर्गर 31 से 60 रुपए, 31 to 60, वन बर्गर 91 to 160, एंड दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस उसका। बर्गर के साथ आई वॉन्ट टू सी कि उसे पिज्जा की सेल कितने की, कंट्रोल प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए बैटमैन ने बर्गर एंड पिज्जा की कैसे उसने सेल की। तो ये होता है डैशबोर्ड, कि कैसे हम उसको डैशबोर्ड को बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा जो डैशबोर्ड है, एनालिसिस है, आप भी कर सकते हो, अपने डाटा पे कर सकते हो। जैसे आप चाहो उसके काउंट्स करनी है, उसके सम करने हैं, मैक्सिमम करने हैं, टॉप 5 करने हैं, वो सारी की सारी चीज इसके थ्रू आप कर सकते हो। ये वाली जो चीज इसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसके लिए अब लेट्स सी कि कैसे हम इस डैशबोर्ड को बना सकते हैं, कैसे इसके अंदर एनालिसिस कर सकते हैं। डाटा जो है आप कहोगे कि ये वाले डाटा पे हम काम करें तो इस डाटा पे कर सकते हैं, बट अगर आप ये कहोगे कि हमारे पास जो स्कूल का डाटा था उसके ऊपर कोई डैशबोर्ड बनाए, कोई रिपोर्ट बनाए, जो आपका स्टूडेंट डाटा था तो उसके ऊपर भी हम रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे ये वाली जो थी, इसके अंदर से मैं सब टोटलिंग को एक बार हटा देता हूँ, ये रिमूव ऑल, तो ये मेरा ओरिजिनल डाटा मेरे पास बन गया। अब इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट ये डाटा है जी, एज ग्रुप का है, हॉबी का है, स्टेट का है, फी चार्ज है। इसके ऊपर मेरे को कोई डेटाबेस बनाना है, डैशबोर्ड बनाना है, दैट ऑल्सो वी कैन मेक। तो किसके ऊपर बनाए जी बताइए। मैं जो ओरिजिनल डाटा दिखा रहा था आपको, जो दिखा रहा था ये वाला सेल्स डाटा, इसके ऊपर बनाए डैशबोर्ड चारू जी, या फिर हम स्टूडेंट्स वाले डाटा के ऊपर कोई डैशबोर्ड बनाए, बताइए जी। Sir, as participants prefer or as you ओके prefer, sir. ओके, नहीं जस्ट आई एम आस्किंग, लाइक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी चीज के ऊपर हम बना सकते हैं डैशबोर्ड, लाइक जो है Right, बस right, आपका sir. आपका डेटाबेस जो है वो एक प्रॉपर जैसे ये होना चाहिए। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट डेटा के ऊपर हम भाई जी डैशबोर्ड जी बनाएंगे, ठीक है जी जी। सर. लेट्स सी कि हमने स्टूडेंट्स डेटा के ऊपर हम चलते हैं और उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाते हैं। तो इसको हम जो है क्या करते हैं, एक नई जगह पे ले जाते हैं, ताकि मेरे पास काफी सीट है, तो आपको एक नई सीट में मैं ले जाकर के स्टूडेंट्स डेटा को मैंने कॉपी कर लिया जी, यहाँ पे एक नई सीट बना ली और इसको मैंने फाइल को सेव एज कर लिया। और लेट्स से कि इसकी फाइल का नाम हमने बोल दिया स्टूडेंट डैशबोर्ड। ये हम जो है इसको एक नया नाम दे दिया इसको। ये मेरे पास डाटा है और टोटल डेट इसके अंदर डाटा है, और इसको चलिए मैं एक बार डाटा को और रोल नंबर वाइज भी मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूं एक बार, ताकि ये देखिए रोल नंबर वाइज मैंने इसको डाटा को सॉर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर मेरे को कोई डैशबोर्ड बनाना है जी, लेट्स सी। इसमें सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि मेरा डेटाबेस गुड डेटाबेस होना चाहिए। अगर गुड डेटाबेस नहीं है तो फिर उसके बाद मेरा ना डैशबोर्ड बन सकता, ना पिवट टेबल बन सकती, कुछ नहीं बन सकती। अब सबसे पहले हमने इसके अंदर जो ये करना है कि अच्छा जी ये रोल नंबर है, मेरे पास नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर, मीडियम, स्टेट, एज, हॉबी, बोर्ड, इसमें इतने कॉलम है। आपके कॉलम और भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेटा में। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा, ये इसको मैंने सीट का नाम चेंज कर लिया,
ये मैं आपको जस्ट मैं बता रहा हूँ, आप करो या नहीं करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा इसका सीट का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे गया, आई वेंट हियर इंसर्ट एंड आई टोल्ड इट pivot table. So in case of pivot table, automatically it has taken the range of my data, all the range. New worksheet, I told it okay, and this is my pivot table. Yesterday we covered कि वो pivot table ये ऐसे मेरे को ये दिखाएगी जी, ये मेरी pivot table आ गई जी। अब इस pivot table के अंदर I want कि I want to create one report, और वो रिपोर्ट मैं चाह रहा हूं कि कैसे रिपोर्ट भाई क्रिएट होनी चाहिए कि मेरे को स्टेट वाइज आई वांट टू सी कि मेरे पास कितनी फीस मेरे को रिसीव हो रही है। तो ये देखिए मेरे को स्टेट वाइज की मेरी फीस आ गई टोटल 24। मैंने स्टेट को यहाँ रखा, फीस को यहाँ पे रखा, और ऐसे करके मेरी ये फीस यहाँ पे आ गई। नाउ आई वांट कि इसको मेरे को सॉर्ट करना है, सॉर्ट, सो दैट कि मेरे को मैक्सिमम फीस जिसकी आई है वो मेरे को सबसे टॉप पे रखना है जी। तो इसको मैंने एक राइट क्लिक किया एंड आई टोल्ड सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया यूपी आई गोट द मैक्सिमम फी एंड एपी आई गोट द मिनिमम फी। तो हेयर 6,87,000, और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ऐसे ये फीस आ गई। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे को देखने हैं, जैसे एक रिपोर्ट मेरे को और बनानी है, तो ये मैंने एक रिपोर्ट बना दी, इसको बोल दी फी चार्ज्ड या फी मतलब जो भी है, ये मेरे पास एक डेटा बेस में एक मेरी रिपोर्ट बन गई जी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, एक और मेरे को पिवट टेबल बनानी है सपोज, ऐसे में मल्टीपल पिवट टेबल बना सकता हूं। डेटा मेरा सेम है बट आई कैन मेक एनी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स देयर, एनी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, एनी नंबर ऑफ चार्ट्स आई कैन क्रिएट, but my source data is same, so that my dashboard is going to work. Now I went like next, so I want to see okay that same data is there, insert, and I put pivot table, and again I click this. So in this pivot table now I want to see कि okay like year wise मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक ये मैंने इसको बोला जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1995 है, 96 है, उसके अंदर मेरे जेंडर वाइज फीमेल एंड मेल कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो ये मैंने स्टूडेंट्स को काउंट करना है जैसे मेरे को, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको काउंट करना है मेरे को स्टूडेंट्स को, तो इनको मैंने उठा के यहाँ पे ये डाल दिया। तो ये मेरे काउंट्स आ गए कि मेरे जो है 95 बर्थ के फीमेल स्टूडेंट्स इसके अंदर डेटा में कोई भी नहीं है, मेल स्टूडेंट्स 4 हैं, 96 में 17 है, 23 है। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो 97 के हैं, जो 74 और 107, 181 स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे मेरे पास रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये चार्ट हो गया। अब इसके अंदर अगर मेरे को कोई चार्ट बनाना है, व्हाट आई कैन डू, इंसर्ट एंड आई कैन से दैट ओके आई वांट टू रिफ्लेक्ट इट एज ए चार्ट। तो मैं क्या करूंगा, पिवट table analysis and pivot chart. So here I can show, okay, let me show it line chart, and here this is the reflection of my year wise कि 95 में जो बर्थ ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने हैं, फिर उसके बाद 96 में ये कैसे कैसे ये मेरी ट्रेंडिंग ये आगे जा रही है इस टाइप से। और इसमें अगर मैं चाहूं तो मैं इसके अंदर नंबर्स भी डाल सकता हूं कि अगर मैं इसमें ऐड डेटा लेबल्स, सो दीज आर द students and this is the male like students 423 107, and in the same way if I want to put the numbers of female students also to add data labels, तो ये females का भी हो गया। I want to change the color, so here I can put here and I can go and I can say like what is the color of the, you see I have made some different coloring. So this is the chart I have made that okay counts, how many counts were there, and depending on the year wise this is giving me this chart. In the same way I can create one chart here and that is the bar chart. So I go here, I say pivot table analysis, and I went there and I said that pivot table analysis design. So here I told pivot chart, so now I told I want bar chart. So I put here and this is the bar chart. So it is telling me, and also in case I want to change the coloring, different coloring, so I can put
These are the fees I'm getting, and I can put here add labels. So these are the labels, like how I'm getting. And suppose if I want, like this 687 should be upper side. So here I can go and put this. So now you'll find that, okay, these are the fees. So here I can change the name also. So instead of total, I can put here fees. ऐसे करके हम like we can put here. Some coloring if you want to change. So again, you can go to format, any coloring you can make and you can change the coloring. So we have made two charts. Now, so this is the gender ratio. I'm giving the seat name. Now next, let's see कि और हम इसमें क्या एनालिसिस कर सकते हैं. Yes ma'am, tell me what type of further analysis we can do here. Anybody? What type of analysis we can do here? Hobby wise, like in case of hobby wise, so how many students are there? So what we can do, again insert, and in insert what I can say, pivot table, and I said that, okay, hobby wise, so this is the, and now see how many students are there hobby wise. So these are the number of students there, okay, hobby wise. And I can also Right, change sir. count of name. I can change here number of students. Student. Yes, so like that I can change the name also. So this is the cooking, and now I want to reflect this as a different chart, pivot table analysis, and I say that pivot chart, this time I want to have the pie chart. So this is my pie chart, and here I can again, let me see that, okay, pivot table chart analysis, and here I said that that is the design, and here I can put some percentage wise, and also if I want to put some hobby also in here, so I can put yes, that I feel that is good, that okay, cricket 38% students are there, right? And the heading anytime I can change, base color also anytime I can change. So this is the thing, it is telling me that, okay, total in yoga 12% students are there, traveling 12%, swimming 3%. So like that I am having this data. I can change the size anytime here. If I want to change the size of this chart, so this also I can increase something, so that also I can do little bit bigger size, that also I can make. In case I don't want heading, so that also I can do that, okay, this heading I want this side, so that also I can put here. So these are the three charts I put. So this I put rename, so that is the hobby. So like that I have created three reports. One is hobby, one is gender ratio, and one is the fee charged, right? And something else we can do, English medium, Hindi medium, and that is the state wise we got, age wise, board. Or the So board board wise. also. Yeah, so what we can do, like let's see, instead of here states, let me get the board. So then I'll show you something different thing. So here is the, okay, there are only three boards, or let's see state only. I thought there are more boards. So these are the states. So now let's create a dashboard. So these are the three reports right now. So now I went here and I said that rename, and let's create a dashboard. So in this dashboard, I can also change the color of these tabs. So I put this dashboard. So first thing is the fees. So what I did, I control X, this one, this chart, and I went here and I put here fee charged. So this is the one chart. Then I went to the gender ratio. I control X. I went here and I put control V. This is the second. Then I went here, hobby, control X, and then I went here and I put here, that is the chart. Here if I want to change the size, so that I can do here. I want that, okay, little some
bigger size, so that I have done. So this is the count of this name. This is the chart. The size, if I want to make like that, this also I have made. Okay. Some tables also, like if I want to, this also like I have done. So these are the three charts I have created. View, I want to see that, okay, no grid lines. So there is only white. So here in background, some color if I want, so that also color I can put here in background, some different color. So like this color or some dark color, or yes. So this type of color also I have put. So this like these are the three charts. Now suppose I want to have one more report, that okay, English medium, Hindi medium, insert and pivot table. So one more, and medium I have put here, and here I told that okay, in medium board I put here, and then I put number of students. So here let's me counts. So note roll number. So let's put, so these are the counts of the English medium, Hindi medium. So these are the students. Now I can, what I can do, the same table I can put here, Control X, and in dashboard one table also, like it's not that always that I should have only the charts. I can put the table also. So that table I have put. What I can do little, and this table which I am having here, so that I can get Control X, and here I can go and put Control V here. So this is the my table. So here again, what I want at a pivot table analysis. So design. So this table also I want to put some coloring. So in coloring, what I want, something such type of color. So this table I have created, that okay, count of the students name and English medium, Hindi medium, all those things I have covered. So little size, let me increase so that, and this size little with this help, and this chart let me put here. So now friends, what we can do, so right now these are different reports. So here in 2010, there is a functionality which we got to know, and that functionality is the slicer. So here, what we can do, how to get the slicer? You go to any chart here, any this report here, and you create here pivot table analysis, insert slicer. So in slicer, now you can say, okay, I want to have a slicer of name of state. I want to have a slicer of board. Now I want to have a slicer of gender, and I want to have a slicer of medium. So I have created 4 slicer. One is gender, medium, board, and this state. So I have put these 4 slicers. So these are the slicers. One is the female and male. Okay, this is the slicer I have put here. One slicer I have put here, board. So these are the 3 boards I have put. One is the state slicer. So I have put here this slicer, and this slicer one is the English medium, Hindi medium. So these 4 slicers I have put here. Or what I can do, the gender here, the state like this. Okay, so like that. I can also change the colors of the slicers. So in the slicers, I can say that, okay, I want this color. Here I can say slicer, this color, and here there are a lot of states. So right now there are different lines. So what I can say that, okay, I want these states in 2 lines. So slicers, I say 2 lines or 3 lines. So in that 3 lines, I'm going to put here, and I can do like that. So in that case, my medium slicer I can move. So this I am just moving. So this is the gender slicer, this is the board slicer, and this is the medium slicer. So I have put all these slicers here. So I'm creating this dashboard, friends. Now you will understand that, okay, how this dashboard is going to work. So
I have made only 4 reports, but you can create even multiple reports, any number of reports, any type of coloring you can give. So now I want that if I'm going to select only Gujarat state, so this report is going to give me result only for Gujarat. If I want that, okay, state board, what is the reflection of state board? So I want to have the state board. So now if I'm going to click state, so my only one chart is changing. That is this one. These charts are not changing. CBSE, everything is same. So what I can do, if I can right click here, so there is a thing that is a report connection. So now I want that my all the charts, all the reports should connect with this slicer. So I should click all these 4 clicks. I said that, okay, that is the thing. Here I go and I said that, okay, report connections and everything should go. This is the thing. Here I again state, if I want to do report connection, this is the thing. And here medium also, report connection. So everything now I have connected. So now you will see that, okay, this is the report and I want to see only for CBSE board. So what I can do, just I click CBSE and you'll see all the charts have changed. That in CBSE board, there are like CBSE, English medium, 101 students, Hindi medium, 57 students. And in fee, UP only got 2,28,800. But if I say ICSE board, so in ICSE board, I am having very few states where I am having fees of Punjab, UP. The biggest one is Punjab, where is 1,02,000. In UP, only 84,000. This is the 95 born students, only 2 students who have opted for ICSE. What is the percentage of students? That is yoga, 16%, 6%. Even I can go here and I can put here format data labels and number of students also I want to put. So I can put value also. So here the value is there. So what it is showing me that in yoga, there are 8 students and that is 16% of the total. Cooking, there are 3 students, 6%. So now in ICSE board, I want to see only for English medium. So this is the report for English medium, only for ICSE board. I want to see only for male students. So now it is showing me ICSE board, male students and English medium. And this is the reflection because here only male. So now it is showing me line of only male. There is 1944. Yoga, in case of this cricket, there are 10 students who have opted for English medium. They are in ICSE board and those are males. And all the states are, only these states are there right now, which are part of this ICSE board. Now I want to see that, okay, I want to see all the boards. So this is all the boards, but only male, only English medium. So like that, you can make the dashboard. And if you want to see everything, just click this. This is the everything. You want to see only for, let's say, Maharashtra. So this report is only for Maharashtra. In case of Maharashtra, how the things are moving. In case of Gujarat, how the things are moving. So this is the reflection of Gujarat. You want to see 2 states together, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, 3 states. So this is the reflection of 3 states, Gujarat, Maharashtra, and all those things. So like that, you can play with your data. Anything, any like reflection you can do, and you can bet everything will be there. Only female, just you want to see what is the reflection of females. All the states, all the boards, all the mediums. So this is the reflection. In case of females, 96 board, such type of things are going and how the things are moving. English medium females, only CBSE board, only 34 students. Hindi medium, ICSE board, only 1 student. And if this is actual data, then you feel that, okay, what type of analysis, what type of wonder you can create. Immediately, click of a button, you are going to get the results. You can have the table, you can have the chart also, anything you can have.
And such type of reports, you can make any number. Right now, I have created one dashboard. You can create second dashboard, third dashboard, same data you can create. Are you getting my point, Charuji? बिल्कुल सर, कुछ समझ absolutely. में आ रहा है? Like something like you find it something amazing. That is the standard Excel. It is not something like you have to buy any software. This is the standard Excel we are talking about. Yes, sir, absolutely. Very useful and interesting one, this pivot table. So this is the pivot tables. So you can create the pivot tables by just only table. So anything like you want to see, and you can also create the dashboard based on the pivot table. And right now I have created only 3 reports. Now you can create some more reports also. That okay, who are the 5 students who have paid maximum fees? So just go here, insert, and pivot table. Okay, and the top paying students. So name of those students. So you put here name, and you put here like fee also, fee charge. So now you want to see only the top 5 students. Go here and say value filters, and you say that top 10. So here you put top 5 students. So you say, okay, these are the 5 students who are paying the maximum fees. Those are the Monica, Pooja, Rosni. What you can do? Control X, go to the dashboard, and you can put this report also. Like let's do a little lesser space, and here you put here Control V, and this is the top 5 students. Okay, now let's see how it is going to work. So now we got one more report. So here, how this will work, let's see. So some beautification you want to do, so go to design, and again you go to somewhere, just you give some different colors which you feel that okay, this looks nice. So you can put some such type of colors. So here right now actually 2 columns are blank. So maybe you have to adjust sometime like this, that okay, this blank is not there. So maybe like some columns you can delete from here, like because there is a table, so we can't delete those columns. But something like you can also create one more report here, and you can put so that it looks little beautify, or like you can put some like these type of this is the board. So here you can put slicer like here. So you can use slicer here, but that will not look nice because all slicers are there. And if you are going to put this one slicer there, so that will not look nice. So in that case, it depends on you how you are. So now you want to see that, okay, these students also should change automatically. Now go to board. So here again, report connection. So here you put this pivot table also again. Okay, here also you go, and here you say that, okay, report connection. So this new table is there. So that also in English medium also, and you say that, okay, report connection. And here, if you want to do, you do. Otherwise, it's not compulsory that every slicer should have. So now you see here the top 5 students you want. So here, if you want that, okay, only English medium, who are the students? So we are saying that Dashti, Harshita, these are the students who are having, and also we can sort it, the top 5, and we should also sort it largest to smallest. So now, whenever we are going to change, only Maharashtra we want to see which are the students. So only there is one student who is English medium. But if I want to see all the mediums, so now you will find the result, different results. All the boards you want, so all those things you will find. Immediately reflection will be there. Immediately. So now you can change the size also so that everything is visible. So anything you can change and reflection will be there. So that is about the dashboard, about the pivot table. Automatically data is changing. So if you have any question,
please ask me related to this dashboard. How you can create this dashboard? Everything is part of pivot table, but this slicer is part of 2010 version. 2010, 2007 it will not work. Yes, ma'am. जी sir. So ये like dashboard I told you. So that dashboard was from but this dashboard I made like from students. So this dashboard I made first time only. Otherwise, like most of the time, like I show the people. So this is the dashboard actually which I am having. And you can create. There are so many type of different dashboards are there, which we can create. So such type of things actually we do for the clients, and different dashboards, like some good looking dashboards actually we create. So any question like participant, please ask me. And today, like this is my second and last session for this your 2 weeks program. So anything like if you have questions, so please ask me related to this dashboard or something else. Otherwise, if you want, so I can cover some more things also. Sir, I check and go through. Your voice. So there is a question by Dr. Pawalkar. He's asking that. So can you hear me, sir? Yeah. Now it's okay. Yes. Ji, sir. So Dr. Pawalkar is asking, can you fetch data about single student on the basis of registration? Single student based on the? Based on the registration number, which is the unique value. Which is the unique Can you fetch value? data about single student on the basis of registration number? Registration number means roll number you are talking about. Ji sir, some unique number, maybe you can say roll number. Okay. And based on that roll number, what we are looking for? He want to fetch a single student data, and simultaneously he wants to work on different files at the same time. Is it possible? Different files, and like in Excel, whatever formulas we are going to put, so those formulas you can also have reference of other file also. So something like if I'm working on X file and your data is in Y file, so obviously you can work in X file, you can put the formula and it can fetch the data from Y file, and it can also fetch the data from Z file. So there are so many formulas, like whether that is VLOOKUP, that is pivot table, whatever data is there. So definitely we can get the data and we can connect with different files. So that is possible. But again, I'll say, like if something like until and unless I'm going to get that data, then only like I can give my comments. So I'm seeing the question like in 2007, Swati is asking, sir, this dashboard will work in 2007 version. No. In 2007, yesterday I told you, if you want to run your this like Paytm, or you want to see but if you are having your phone like 3310, old phone, not a smartphone, so it will not work. So in the same way, this dashboard will work only in 2010 and onwards version, because this slicer functionality that came in 2010. So in 2007, you can make pivot table, whatever pivot tables we have created. So these pivot tables, you can create different charts, but this working, like clicking of a slicer and all the charts are changing, my table is changing, that will not work in 2007. What other questions are there about merging many Excel files into one having similar headings? So there is a question like Prajakta she is asking that please tell about merging many Excel files into one having similar headings. So definitely it can be done. You please visit to my YouTube channel, and that is also part, or also you can go to my this website. So there is a merge all files of a folder in real time.
that can be of a folder, that can be of a in folder some like particular files. I am also having one video, and that is very popular video on my YouTube channel. And just to type merge all files of a folder in my YouTube channel. So I can also show you like how this video definitely multiple files. Yeah, you are getting data from different department students, and all are having the same headings. Immediately within minutes, seconds, hundred of files you can like. So I show you how where you can find this video. So please go to my channel Champ Excel YouTube. Yesterday also I show you. So this is my Champ Excel channel. Champ Excel. So here you can find merging multiple files. So you'll find here. So these are the different report: auto indexing, aging report, automation, bank cash credit, GST automation, Excel tutorial. So when you go to videos, so here you can find this merge multiple files. So here you can go there sort, and in sort most popular. So in case of most popular, you will find merge multiple files and folder in single click. So when you are going to this video, this is merge multiple file sheets from a folder in a single click. So there is a utility, and you can do all these things. बताने जा रहा हूं दोस्तों, इससे आप अपना फोटो का करनी पड़ेगी. So यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि कैसे आप जो है इसको मर्ज कर सकते हैं. So there are so many things actually, friends, which you can have and you can find out. Any other questions? So if you are having, so maybe because I want that, okay, it's to not happen that you feel that, okay, I'm not taking your questions. So just I'm telling just to save that time. So you can go to my this YouTube channel and how to merge files. And in case if you are having question, so there is the like numbers are there. You can contact me. I have already shared my number with you. Right, sir. So Sir, there is. yes, sir. yes, please. So we are having 15 minutes more, so no problem. And even I'm okay with like, you know, even 10-15 minutes more. So if you are okay, so I can take whatever questions you people are having. So please ask any question, whether I have covered that topic or not. Something like if I find that is 1 minute, 2 minute answer, so I'll answer right now, or maybe I'll say that, okay, just write a mail to me or WhatsApp to me. Ji, sir, there are two interlinked questions actually. So one question is, can this dashboard be exported to a website? And another thing is that if, let's suppose that the data is being accumulated online, can this dashboard adjust itself automatically and refresh itself? Yes, so nowadays, like in Microsoft 365, what we are having, so we can have our files on clouds, okay? And in clouds, there are like Power Query is one feature of Microsoft Excel. So through Power Query, we can fetch the data from the different files, folders, or from internet also, even from the server also. And once we fetch the data, so it will fetch on real-time basis, and immediately it will also create the dashboard also. So I have also like different things like from internet also how to fetch the data. Like yesterday someone was asking that, okay, we are having like different share prices, or maybe some data we are having on internet, like daily exchange rates are changing. So we want that, okay, real-time basis it is getting the data. So how we can get? So with the help of Power Query, that can done very easily. Ji, sir. Sir, there is a question that is it possible to create Venn diagram using Excel? One diagram from? Venn diagrams. Yes, sir. Venn diagram. Venn diagram. So actually, I'm like listening first time. So even actually, I'm not aware what is the Venn diagram. So maybe if some other name also we call it, so maybe I can understand. But I have never heard what is Venn diagram. So if you can tell me something like what is the thing, or in Excel, like if you can show me, so maybe I can take it.
or maybe I'll explore the Venn diagram like on internet, and maybe then I can answer the question. One person is Tushti Bhardwaj is asking, yesterday you told about sorting names with initial and last name. Can you please demonstrate it once? I'm not able to do it. I have 2007 version. Is it possible to do in 2007? Initial and last name. So yes, like in case I want that, okay, let's go to this data. So here I am having this data. Again, this data here. I want to sort this data. So let's move this only name. So here, if someone wants to sort the data on which name, so you want that, okay, like last name, you want to sort the data. So first I can create last name. Okay. So as a helper column, I can create the last name. So here I can use the functionality of flash fill. Yesterday we have covered GANISAB, Altaf. So automatically I can use, and this is the all the last name has come. Now if I want to sort the last based on the last name, I go here and go to data and click here in this data, go to sort whether A to Z or Z to A. Just if I'm going to click A to Z, so all the this Agrawal, Ahirwal, so all those things, this is the last name. If the surname will be there, Chaudhary. So this is all the Chaudhary will be there. So everything will be alphabetically. So these are the Kumar. So with the name, so this is the full name is also there. I have created one other column. So based on that column, so this is like sorting their data. Is it fine? That is the question or some other question? Please tell me. Sir, I think this was the question that how to sort data on the basis of first and sir. Sir, can we One take? Is asking, is it possible to download emails based on subject in an Excel file? जी सर आजकल ऑनलाइन चेकिंग है ना सर तो आई थिंक दिस इज द कंसर्न कैसे मैं आप समझा नहीं इज इट पॉसिबल टू डाउनलोड ईमेल्स बेस्ड ऑन सब्जेक्ट in an Excel file? What it means? Sir, like these days online examinations are going on and teachers are being sent online scripts, answer scripts of the students. So I think the question is related to that only, that is it possible to download those I think attachments maybe that are coming as answer scripts and that can be maintained subject wise in an Excel file? सब्जेक्ट वाइज अगर आपका डाटा है तो कुछ भी हम जैसे चीजें कर सकते हैं, बट मेरे को यही थोड़ा सा वो तो हम भाई उसके थ्रू हम लाइक इज इट पॉसिबल टू डाउनलोड ईमेल्स बेस्ड ऑन सब्जेक्ट इन एन एक्सेल फाइल? ये कुछ मेरे को लाइक कंफ्यूजिंग सा लग रहा है. Deepashri ma'am, would you like to ask the question, sir, directly? Okay, sir. So I'll just promote Deepashri ma'am. She can ask directly. Yeah, please. And yes, also like whatever I'm showing you today. So this is I'm saying. So I'm talking about LKG, UKG. So Excel is an ocean. So right now, whatever I'm showing you, that is very, very small things actually I'm showing. Like very basic, maybe even less than LKG. But Excel is really like great. So it can really do wonders when I'm going to show you something like which I'm doing for clients or which I'm doing for like some organizations. So how the things like earlier they used to do the work in 10 days and today they are doing the same work in 10 minutes with more accuracy. So that type of power Excel is having and that type of solutions actually our like company is doing. Yes, ma'am, please. Sir, actually, this time when we had the university examinations, we told students to send the answer scripts in emails. Now, what happens, sir, that in the subject line, they write their university roll numbers.
Now, many a times, suppose there are 300, 350, 550 mails of every subject. Now, there are possibilities that we might miss some of the mails. Like, because I heard from someone that there is an option in Gmail where we can, all those mails which have attachment, that with subject lines and who has sent it, we can download it in Excel. So I was thinking that is there a way to do that? Because when we get 500 mails, answer scripts in a single mail, and when we are the examiners, there are chances that we might miss some of the mails because every page has 50 odd mails. So is there any way, sir, that we can download all the mails in some Excel file, so that if we search it, and then we can find out which students have sent and which students have not sent the answer scripts? Yes, so ma'am, like your question answer is yes, like that type of like possibilities is there. So what happens, like in our mobile also, there are so many like apps are there. So in the same way on Gmail, like people have created lot of like utilities or add-ins. So which are going to work on the Gmail related to Gmail. There are thousands of things are there, right? So we can find out that okay, this is our like such type of functionality actually we are looking for, and those add-ins sometimes those are available free of cost, and sometimes those are available with little charge. So a little bit we have to explore the things, but yes, definitely such type of things. And in Gmail, like what type, that is a standard feature, like you can create some like folders, and you want that if the heading is with that state name, and if you have created a folder with the name of state, so we can customize, we can define the rules, so that we can do very easily. That is the functionality of Outlook or Gmail. So whenever you are going to get some mail where the subject name is containing suppose Gujarat, and you are having a folder of the Gujarat, and you have asked told the Gmail that you have just created the rules, so it is going to take just 5-10 minutes 15 minutes to create the rules. So automatically what will happen, whatever the subject with the name of Gujarat containing, it will go to the Gujarat folder. So like that, if in the text also, if you are having something subject or heading or the mail ID is reflected coming from that person, so it should go in that particular folder. So all those things are automatically will happen. So that is the possibility of Outlook and Gmail. And the attachment, automatically all the downloads, those add-ins you can find out from the Gmail, and definitely such type of add-ins are there. Ji, sir. Thank you, sir. I think, ma'am, it has sorted your query. So there is one question that is it possible to calculate trend values by using a formula in Excel? Like we have a value for 5 years and we want to calculate the value for another 3 years. Yes. So that functionality is so you see here in 2016 or Office 365, there is a forecast sheet is there. You see, this is in data itself, and there is a forecast. So create a new worksheet to predict data trends, preview different forecast options before generating. So we can create some forecasting also. So some formulas also there related to forecast. So again, this forecast like confined state, linear forecasting, all those things like forecast. So depending on the data, so we can find out and we can give the forecast what is the X, known Y is known X is, and accordingly it is going to give me the results. So this function is available for compatibility with Excel 2013 and earlier. So like that, different versions are there. So I'll suggest today and yesterday and today I have given like one overview, like I'm saying, but there are so many things. But maybe one thing which a particular participant is asking, maybe that is not required for most of the students. So definitely in that case, those type of things, maybe you can ask, you can mail me, and I'll try as per my like convenience, my time. So I'll try to answer all those questions. Or maybe again, we can have some programs, and there you can send me that these are the top 10 questions. And all these 10 questions or these functionality we should cover, like how to download automatically from internet dynamically. So such type of things we can cover. We can cover Office 365 version. So like when I'm having a corporate program, maybe for 2 days, 3 days, so I'm having, these are the functions which are part of Microsoft 365 and Excel 2016, only 1 or 2 things, but most of the things, unique function, sort formula, filter,
if X lookup, these all are part of 365. They will not work in 2019, 16, 13, not in any version it is going to work. What is the unique function? I'm telling you, Office 365, what it is going to do dynamically. Like if you are having, like these are the different hobbies are there, and you want to create a list of hobby dynamically, what you can put unique formula and just select this column and enter. Automatically all the hobbies are available. Now if you are going to change the hobby, suppose you are going to put only traveling, this is automatically it is changing hobby, that is the traveling only. So whatever you are changing here, now you say that okay, you are going to listening, automatically that is dynamically AA, anything if you are going to put, so that is the thing that automatically it is creating the list. So this is the, I have put only formula in one cell and this is created the list automatically. If I am going to delete the data, my list automatically is going to change immediately. That is traveling, listening. I can also remove this 0 if I'm going to give the exact this length, because right now I have given the full length. So that's why it is giving me 0 also 1. Otherwise, you see, automatically it is giving me. So such type of things are there. I can also, now it is unique. If I want to make it sort also, I can sort also. I can filter also. So those type of things are available in Office 365. Earlier, those things were not possible in earlier ones. So things are moving, like what we were having in WhatsApp maybe 5 years back, today more functionalities are there. So like that, every day, every week, like we are getting something new. So those are the things. And that's all from my side. Again, I'll sharing my this email ID, my YouTube channel, and I'm very thankful to the management and Anjali ji, CP Gupta ji, and the moderator Charu ji, yesterday Ansika ji, so for giving me this opportunity, and all the participants, because without participants there is nothing, whether there is management is there or me, like, so you all participated very well till last time you were there, and I'm really very thankful. And this is little like experience, because most of the times I'm having sessions for chartered accountants or big corporates, or I'm having programs for ICI, like for this forensic audit. But for such a like great gathering and so many all of you from all India, so really it's a great privilege. I'm very, very thankful, and I look forward such type of sessions in future also. Thank you, sir, for being so humble, but it's actually our honor to have you amongst us. And actually, very rightly said by you, sir, Excel is an ocean. So there is a lot which one can do on Excel, and there is a research, there are other things, analysis, report making, presentation, so dashboard creation, whatever you have taught us. It's absolutely amazing, sir. And it is very much visible from the comment box. The chat box is full of thank you messages for you and very special messages for you also, sir. And we are really grateful that you joined us. You gave us such a valuable time of yours, 2 days of yours. And we are really happy that we could get a lot of information, amazing information from you, sir. Thank you very much, sir. And also, like one thing I always say, like beside Excel, I'm also very passionate about yoga. So yesterday I also told, like I'm also having yoga classes on my YouTube channel live. I'm attached with Bharti Yoga Sansthan, and from since last 7 months, last 9 months, so we are having YouTube channel, all the live classes every morning. So if you are interested, so because like if your health is not good, so whatever like you have achieved, everything is like waste. So first Health thing, is like wealth, top sir. priority, we should have our health. So whatever age you are having, whatever department you are working, so definitely the top priority, we should have health. So Right, that sir. also, like from my side. Physical health leads to good mental health. Yes, Good, sir. both. So yes, Thank you, definitely. sir. And Thank you. yoga is something like which it's going to give not only physical health, so mentally also, adhyatmic also, like in all ways, like it is going to help us. अब तो पूरा वर्ड मान चुका है जी, अब तो ये कोरोना में तो लोगों ने बिल्कुल प्रूव हो गया कि जो योग से जुड़े हुए थे
उनको जो है काफी कम प्रॉब्लम्स आई हैं। जी सर। ठीक है जी चारू जी, और मेरे लायक कोई सेवा हो थैंक यू और सर। कोई पार्टिसिपेंट, सो प्लीज आस्क मी एनी टाइम। नहीं नहीं सर, बिल्कुल ऐसे। और अंजलि जी We का would surely like बाकी, to be associated with you in the future also. जी और सर। संजीव जी ने मेरे को CP कनेक्ट किया गुप्ता था। सर के संजीव जी जो हमारे काउंसिल मेंबर है संजीव सिंगल जी, उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया था। जी सर, सो आई एम संजीव वेरी सिंघल थैंकफुल टू सर। हाँ संजीव जी जी कि उन्होंने मेरे को कनेक्ट किया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। और आई लुक फॉरवर्ड कि कभी आपका, जैसे अभी 2 वीक का सेशन हो रहा है, नए अलग आ रहे हैं, तो कभी ऐसा कुछ प्लान होगा कि आपका पूरे वीक का 10 डेज का लाइक एक सेशन जो है केवल एक्सेल के ऊपर हो, डिफरेंट डिफरेंट काफी डिटेल्ड में हो, तो डेफिनेटली आई लव टू डू सच टाइप ऑफ सेशंस। ठीक है जी, जी थैंक सर, यू गुड फ्रॉम माय आइडिया आई साइड। थिंक। और अगर कोई गलती, जैसे कोई अगर किसी को थैंक यू कोई सर। ऐसा कुछ कहीं पे भी अगर कुछ लगा हो, तो कोई भी मेरी इंटेंशन नहीं है, कोई कई बार होता है कि कुछ ऐसा फील हुआ हो, तो ऐसी कोई इंटेंशन नहीं रही मेरी। तो आई फील सॉरी ऑल्सो इन केस अगर नहीं किसी को बिल्कुल लगा नहीं कोई। सर, एब्सोल्युटली नॉट सर, बिल्कुल नहीं। जी सर, थैंक यू सीपी गुप्ता सर और एसपी अग्रवाल सर, जेएल गुप्ता सर, अंजलि मैम और रेखा मैम, और संजीव सर के बिहाफ पे भी थैंक्स टू यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। ऑल्सो जो आपका अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक है, अगर वो मेरे को शेयर करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, या कुछ नेक्स्ट टाइम जो है उसको। जी सर, अगर आप लोग अगर ऐसा कुछ एवरी डे करते वी टेक, जी सर, एवरी डे वी सर्कुलेट फीडबैक फॉर्म। सो हमारे पास जो भी रिस्पॉन्सेज आएंगे आपके सेशन से रिलेटेड, वी शेयर इट विद यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।